Tetracyclines. As the name suggests, it indicates four cyclic ring. The antibiotic which has four cyclic ring nucleus in their structure that are called tetracyclines. These are basically obtained from soil actinomycetes and are divided into three groups or three classes. Uh, in the first class, the drugs are comes under first class chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline. In second group or second class, drugs are dimeclocycline, methocycline, limecycline. And in the third class or third group, drugs are minocycline and doxycycline. As you know, the third class or third group or third generation is the new generation. So these are widely used, minocycline and doxycycline, and these are less adverse effects. Have these third generation groups or third generation antibiotics of tetracycline are have less adverse effect than first and second generation. So these are widely used. As I told, these are having a nucleus of four cyclic ring, and these are bacteriostatic in nature and broad spectrum of activity. Some important points related to tetracycline. What are they? They are tetracyclines are chelating property, having the chelating properties. So, in presence of food, dairy products, antacids, its absorption is decreases except doxycycline and minocycline. These both are third generation or third group tetracycline. Both are third group. So all tetracyclines are absorption of all tetracyclines decreases in presence of food except doxycycline and minocycline. Similarly, all tetracycline are nephrotoxic drugs and primarily excreted through urine except doxycycline and minocycline. Third generation or third group drugs are safe in renal failure. Example doxycycline and minocycline. Safe in renal failure. You can use it in renal failure. All tetracycline secrete through breast milk and can cross placental barrier and produce its effect on fetus. So teratogenic in nature. So it is contraindicated in breastfeeding mothers and pregnant women due to decrease tetracycline decrease the bone growth of fetus. So it is contraindicated in pregnancy and breastfeeding mothers. Now see some adverse effects of tetracycline. A trick to remember the adverse effects is कपिल देव क्या करते थे, बैटिंग करते थे। कपिल देव क्या करते थे, बैटिंग करते थे। तो इससे ही बनाया है, ट्रिक है। के से हो गया किडनी डैमेज, के से हो गया किडनी डैमेज। ए से हो गया एंटी एनाबोलिक इफेक्ट। पी से हो गया फोटोटॉक्सिसिटी। आई से हो गया इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। एल से हो गया लिवर डैमेज। डी से हो गया डायबिटीज इंसिपिडस। डी ईवी से हो गया एक्सपायर्ड ड्रग कैन कॉज फैंकोनी सिंड्रोम। ई से हो गया एक्सपायर्ड ड्रग कैन कॉज फैंकोनी सिंड्रोम। एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन। बेट बेट में से बेट से हो गया बोन डिफॉर्मेशन
और डिक्रीज बोन ग्रोथ ऑफ फिटस, टी से हो गया टेराटोजेनिक इन नेचर। एक अदर एडवर्स इफेक्ट है डिस्कोलरेशन, डिस्कोलरेशन ऑफ टीथ। ये अनदर एक एडवर्स इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन का, डिस्कोलरेशन ऑफ टीथ। ना देख लेते हैं इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया है, क्या है, आरबीसी इन प्लाज्मा। आर से हो गया रिकेट, रिकेट में हम यूज करते हैं। बी से ब्रुसेलोसिस, सी से हो गया कॉलेरा, कॉलेरा में ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन, ड्रग ऑफ चॉइस है। आरबीसी इन से हो गया इंगुइनल, और इसे ग्रानुलोमा बोलते हैं। ग्रानुलोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन। प्लेग में भी ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन। पेप्टिक अल्सर में भी यूज करते हैं। एल से हो गया लेप्रोसी, लाइम, एलजीबी। ए से हो गया एटिपिकल निमोनिया, एस से हो गया शियाद, एम से मलेरिया, ए से हो गया एमोइबियासिस। As you know, I told the mechanism in previous lecture. If you आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख के आइए और इस वीडियो में देखिए, कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कैसे होता है, और कैसे हम इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसका मैकेनिज्म एज वी नो, the tetracycline binds to the 30th ribosomal subunit and inhibit amino acid tRNA attachment to the A site. As a result, protein synthesis is inhibited and bacteria will be die. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पी साइड पे पहले से ही 3 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं और चौथा एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कौन करता है, mRNA आइडेंटिफाई करता है। mRNA आइडेंटिफाई करेगा चौथा एमिनो एसिड को, और उसे लाने का काम कौन करता है, tRNA करता है। तो हमारा ड्रग टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करेगा जो ट्रांसफर हो रहा है, और जो tRNA अटैचमेंट, inhibit the tRNA amino acid tRNA attachment to the A site। यहाँ पे वो जो A साइड पे आके बाइंड हो रहा था उसको इनहिबिट करेगा टेट्रासाइक्लिन, जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन बैक्टीरिया विल बी डाई। ये था हमारा टेट्रासाइक्लिन का कंप्लीट लेक्चर।